Okay, so good morning, everyone. Today on 8th December, we meet again to resume our reading of Realization-Centered Spiritualism, which is English translation version of Anubhavatmak Adhyatmavad 2023 edition. That is the edition we are referring to whenever we refer to the Hindi text or the page numbers in the book. And we will be beginning from page 52, first paragraph, new paragraph of the book. Up to that point, we covered in the last Sunday meeting. So if we see here in these previous paragraphs, Babaji is talking about, the author is talking about, let's say the four orders and Rachana Virachana, compositions and decompositions. How, if you remember in the last session, we had a discussion of, like Andaj, Pindaj and Udbij. Okay, in the animal order. Childbirth takes place through the process in which one way is eggs are formed and delivered by the mother. The second is uh, uh, a living being is delivered by the mother, and the third category is where both the options exist. So in this way, whatever we see in the material order, plant order, animal order, and the human order, this is being covered in this section, and we continue from this point. So one of you can read from here, and then we can start it. Maybe you can read both these paragraphs, because actually in the Hindi book it is one paragraph only. For the ease of reading, I have subdivided it into two. So in one go, we can read it. कौन who volunteers अपने regular participants में से? I can start. Yeah, I can do the जी English. जी good. Am I audible? Yes. Okay. ज्ञानावस्था की इकाई सअस्तित्व में केवल मानव है। ज्ञानावस्था का तात्पर्य ही है जीवंत मानव शरीर रचना, 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों, सीमागत कार्यकलापों के अतिरिक्त तथ्य को उद्घाटित करना। मानव शरीर रचना गर्भाशय विधि से होना देखा गया है। गर्भाशय में भ्रूण रचना डिंब और शुक्र कीट संयोग विधि से होना भी ज्ञात हो चुका है। डिंब और शुक्र कीट मूलतः प्राण कोशिकाओं में निहित प्राण सूत्रों का ही रचना है। इस रचना में अर्थात उभय कीट रचना संयुक्त रूप में ही रचना शरीर रचना सूत्र रूप में स्थापित रहती है। इसी कारणवश उभयलिंगी या स्त्री या पुरुष शरीर क्रम बना ही रहता है। इसका गवाही उभयलिंगी शरीर रचना होती है। इस प्रकार वंशानुसंगीय रचना मूलतः उभय कीट में समाई हुई शरीर रचना सूत्र पर आधारित रहना स्पष्ट है। इसी क्रम में मानव शरीर का भी रचना संपन्न हुआ रहता है। मानव शरीर रचना में अंतर यही है, समृद्धिपूर्ण मेदस रचना रहता है। इसी के आधार पर जीवनी क्रम से आगे जागृति क्रम में आरूढ़ होता है। आदिकालीन मानव से अभी तक किए गए कृत्यों और परंपराओं को देखने से यह साक्षित होता है। जागृति क्रम में आरूढ़ होने का साक्ष्य शरीर को जीवन समझते हुए भी शरीर कृत्यों से तृप्त न होना, अव्यवस्था की समझ से पीड़ा होना, अन्याय और समस्या की पीड़ा से पीड़ित होना, एक भाग इन पीड़ाओं से विस्मृत होने के लिए प्रलोभनों आस्थाओं को अपनाता हुआ देखा गया। In existence, only human beings belong to the knowledge order. You, Spencer. Yes. Can you hear me?
Yes, yes. Yes. Okay. In existence, only human beings belong to the knowledge order. To unveil something beyond the activities of the 5 sensory and 5 work organs in an alive human body is the meaning of knowledge order. It has been seen that the human body gets formed in the womb by way of pregnancy. It is also known that the embryo gets formed in the womb as a result of the fusion of ovum, egg, and sperm gametes. Basically, ovum and sperm are the compositions of prana sutras inherent in the biological cells. The code of human body composition lies in the conjunction of both these gametes. It is due to this that the continuity of tradition of both the genders, female and male bodies, is maintained. Continuity of formation of bodies of both the genders in tradition is its evidence. In this manner, it is clear that the formation of the species conformant bodies are based on the code design contained in both the gametes. On this course, formation of human bodies also continues. The only difference is that the human body has a fully developed brain, due to which Jivan moves ahead from living world progression to awakening progression. All the actions and traditions of humans since ancient times till now is its testimony. Assuming the body to be Jivan, but still not getting fulfilled by bodily actions, being in anguish due to prevailing chaos or disorderliness, and being in anguish due to injustice and problems, all this is the testimony of moving ahead in awakening progression. To forget this anguish, one section of humans is seen to be clinging to temptations and faiths. Thanks. Good. Thank you, Devai. Thank you, Spencer. Okay, so most of it is straightforward. But we will still spend some time on this. There are some words which I think some of you may have difficulty. I had difficulty for the first time when I was reading it. One is in Hindi. This is उभय कीट रचना, है ना, और कीट संयोग, ऐसा करके 2 वर्ड आया है. देव भाई, have you heard these things, these words before? Not Hindi words here. Yes. Okay. Okay, so I also struggled to find equivalent English word, and I realized, let me share with you that there are, this gamete word is there which fits beautifully here. I will share it with you. Moment. So yes, you can. I think you can see that, the dictionary. Okay, so can one of you read it? Yes. A Yeah. mature male or female germ cell, usually possessing a haploid chromosome set and capable of initiating formation of a new diploid individual by fusion with a gamete of the opposite sex. Okay, so when Babaji is saying that Shukra Keet and Dimb Keet, basically Shukra is the sperm cell, and Dimb is the egg in the female body, and gamete is the word which collectively refers to either of them. So male gamete, female gamete, that way. So this is the word which I thought fits here. And now we can look at the translation also. 1 minute. I think the words definitely fit. I'm just, for my own curiosity, could you directly translate those 2 words into English, how Babaji has said?
Or is this the direct translation? You know what I mean? No, please say it again. Like sometimes Babaji uses like interesting language. Like for example, like DNA, maybe he Hmm. says like pranic threads, you know? Hmm. I'm just curious how it comes across in Hindi language when he says sperm and egg. Because So sperm and yeah. So here it is this dimb and shukra, dimb or shukra. Okay, so shukra is very clearly referring to the sperm part, and dimb is very clearly referring to the ovum or the egg part. Okay, this is what we have mentioned here. There is no doubt about that. Now, the only word which is new to me during the translation process is this Keet Rachana or Ubhay Keet Rachana. Okay, this I had never read before. So, but what is Keet is like my sense is what I derive from here is that these are very minute, just like small insects. Keet is in that way in Hindi means a very small microscopic insect or very small insect. Okay, so these eggs and sperms, they are very, very small, and then they get together and a new biological body, either in the animal species or in the humans, it gets developed. So Ubhay Keet Rachana, this is the sense it gives, and then this word gamete is there, which relates to that. got it. Thank you. Okay, so I think broadly, instead of looking at word by word, Babaji is describing something which is all of us know, that the body is formed in the womb, and like by getting together of ovum and sperm, and Pran Sutra word Babaji uses, and we do not have a final word for it till that time. Here we are just putting Pran Sutra for Pran Sutra itself. Okay, and in this manner, ये वाला क्रम बना रहता है, स्त्री पुरुष शरीर क्रम बना रहता है. It is due to this fact that the continuity of tradition of both the genders, female and male bodies, is maintained. Oh, So wait, this is yeah. I wanted to quickly talk about this one sentence. I Yes. think when we say continuity of tradition, I think we are using pretty much repeat words, Yes, isn't it? I also think so. I also So think maybe so. we can use either continuity or tradition. Which one do you prefer? I'm good with either. I think continuity. Of both the genders is maintained. Continuity of formation of both of these genders in tradition is okay. So at one point we are saying continuity. In the next sentence we say tradition. That also is good enough. Is its evidence. ठीक है. Now so इसी क्रम में मानव शरीर का भी रचना संपन्न हुआ रहता है. Okay. On this course, formation of human body also continues. So it is apparent in animal world also, and similarly it is apparent in knowledge order also. Now the next thing is what Babaji is saying here. The only difference is that the human body has a fully developed brain. Okay, this is the uniqueness of humans as compared to animals, that they have fully developed brain, due to which Jivan moves ahead from living world progression to awakening progression. Right. So humans have the possibility, the potential to be awakened, which animals do not have. Yeah, this Babaji has mentioned earlier, but it needs to be emphasized because many times I have seen that we as students, even after a long time get confused, and there is this feeling always that like animals and humans, like there is a lot of similarity. Yes, there is a lot of similarity, but there is a difference also. Humans have the potential to understand the whole existence, which animals do not have. Okay.
And the more we think about it, the more this clarity gets resolved inside us. And like it is only the humans who have some fundamental questions about whether the earth is flat or is spherical. No animal has these questions. Okay, what is the population of humans on this earth? What is the population of tigers on this earth? What is population of elephants on this earth? Humans have these questions and they find their answers. No elephant, no tiger, no other animal has these questions. At least such evidence is not available that they are sort of counting themselves from population perspective or trying to get answers of some fundamental question. This is what makes humans unique and a separate category from animals. Okay, in Madhyas Darshan, they are called the knowledge order, ज्ञानावस्था की इकाई. सो को देखने को मिलता है. ओके, नो जागृति क्रम में आरूढ़ होने का साक्ष्य. सो व्हाट इज द एविडेंस दैट दे आर इन द अवेकनिंग प्रोग्रेशन? ऑल द एक्शंस एंड ट्रेडिशंस ऑफ ह्यूमंस सिंस एंशिएंट टाइम्स टिल नाउ इज इट्स टेस्टिमनी, assuming the body to be the जीवन, but still not getting fulfilled by bodily actions. है ना? शरीर को जीवन समझते हुए भी शरीर कृत्यों से तृप्त ना होना, अव्यवस्था की समझ से पीड़ा होना, being in anguish due to prevailing chaos or disorderliness, अन्याय और समस्या की पीड़ा से पीड़ित रहना, and being in anguish due to injustice and problems. एक भाग मतलब मानव जाति का एक भाग इन पीड़ाओं से विस्मृत होने के लिए प्रलोभनों आस्थाओं को अपनाता हुआ देखा गया. To forget this anguish, one section of humans is seen to be clinging to temptations and faiths. Okay, or temptations and beliefs. Wow, this last line really, really good. Because this is pretty evident, when people say also, if you're feeling sad, stressed or something, let's just listen to music or Yes, something, just start some hobby or whatever. yes, So, yeah, yes. good line. Okay, so good. So any questions here, any comments up to this point? Any observations? No, Bhaiya, all good. As Dev Bhai pointed out, the last line is really very beautifully put. Ye- And the whole last phrase. Yes, yes. Okay, okay, good. So we can read the next para also. Let's read the next two paragraphs together again to this point. शिल्पा दीदी आप पढ़ेंगे? Yeah, I'll read. हाँ, मैं पढ़ती हूँ. परंपरा के रूप में मानव बहुमुखी प्रवृत्तियां, कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता जैसी मौलिक स्वत्व के आधार पर फैलता ही गया. ऐसा विविध आयामों, दिशा, कोणों, परिप्रेक्ष्यों के क्रम में फैला हुआ परंपरा में से के लिए शिक्षा, संस्कार, संविधान, व्यवस्था, दूसरे भाषा में समुदाय के संस्कृति, सभ्यता, विधि, व्यवस्था के रूपों में परंपराओं का होना देखा गया है. मानव शरीर का संचालन भी जीवन ही संपन्न करने का तथ्य सुस्पष्ट है. मानव शरीर संचालन संस्कार अनुषंगीय होने के अर्थ में ही बहुमुखी परंपराएं देखने को मिला. यह केवल मानव परंपरा में ही मिला. इसमें यह भी देखने को मिला मानव ही अपने विभूतियों का सदुपयोग और दुरुपयोग कर सकता है, क्योंकि संपूर्ण मानव में शुभाकांक्षा उमड़ती ही रहती है. इन उमड़ती हुई शुभाकांक्षा ध्रुवीकृत होने के ओर ही सुदूर विगत से इस दशक तक किए गए प्रयास और अभिव्यक्तियों से इसी तथ्य की पुष्टि होती है. सर्वशुभ और उसकी प्रतिष्ठा सर्वसुलभ रूप में तभी संभव होना देखा गया है
कि हर बच्चे बड़े जागृति को प्रमाणित कर दें। ऐसी लोकव्यापीकृत जागृति, लोकव्यापीकृत सर्वशुभ प्रमाण योग्य जागृति, जागृत परंपरा में से के लिए होना भी सुस्पष्ट हो चुकी है। जागृत जीवन में मध्यस्थ क्रिया, मध्यस्थ शक्ति, मध्यस्थ बल के स्वरूप को समझने की विधि सहित उसका कार्य स्वरूप और प्रयोजनों को ज्ञात कर लेना आवश्यक है। यही शिक्षा संस्कार का प्रयोजन है। इससे लोकव्यापीकरण कार्यक्रम में सहज गति सुलभ होगा ही। यस स्पेंसर। Yes. Thank you, Didi. Yeah. There. Humans kept on expanding in the form. Oh, sorry. Okay. Humans kept on expanding in the form of tradition on the basis of unique innateness, like versatile aptitudes and attitudes, imagination, and free will. It has been seen that all education, sanskar, constitution, and systems, or rather the traditions in the form of culture, civility, laws, and systems of all sects, is in, by, and for traditions expanding in such diverse dimensions, directions, angles, and areas. The fact that it is Jivan indeed which drives the human body is absolutely clear. It has been seen that the prevalence of diverse and versatile traditions are there because the human body is driven by and for sanskar conformity. This is seen only in human tradition. In this, another observation is that it is only the humans who can put their powers to good use or misuse. As the aspiration for good keeps on gushing in all human beings, all the endeavors and expressions from ancient times till this last decade of the 20th century support the fact that these gushes of aspirations for good are in this direction only. It has been seen that universal availability of universal good and its eminence becomes possible only when all young and old produce evidence of awakening. It is also absolutely clear by now that such accessible awakening, or the awakening capable of the evidence of universal good, is in, by, and for the awakened tradition. It is essential to figure out the method of understanding the true form of mediative activity, mediative power, and mediative strength in the awakened Jivan, along with its working, design, and purposes. This is indeed the purpose of education sanskar. This will naturally accelerate the program of dissemination. Good. Thank you, both of you. Okay, so this also, I don't have much to add, although you may yourself, all of you, have a relook at these sections. Okay. परंपरा के रूप में मानव बहुमुखी प्रवृत्तियों को here I have taken as aptitudes and attitudes. Okay, बहुमुखी means versatile, diverse, multidimensional. बहुमुखी परंपरा के रूप में मानव बहुमुखी प्रवृत्तियां कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता जैसे मौलिक स्वत्व के आधार पर फैलता ही गया. Okay, so the sense I get from this sentence is, like in the form of tradition, humans, they do not behave uniformly. Okay. They have their own preferences, their aptitudes, attitudes are different.
Okay, so this is how it translates to humans kept on expanding in the form of tradition on the basis of unique innateness like versatile aptitudes and attitudes, imagination, and free will. That's why humans appear to be, there's a lot of diversity in actions, which in a particular species in animals is not there. Overall, in animals, we see diversity. Okay, but like elephants, they appear to be behaving like largely like one. Okay, tigers, rabbits, any animal we take, any bird we take, they have their own way of living. Okay, so in one species we do not see the kind of diversity which we see in humans. This is what Babaji is saying here. Shilpa Didi, you raised your hand. No, I was just saying when you were explaining like multidimensional for Bahumukhi was sounding really nice. So I don't know if you want to use that. ओके ओके सो बहुमुखी को यहाँ पे वर्सेटाइल की जगह मल्टी डायमेंशनल कर दे. हाँ मतलब मुझे तो I was really enjoying the sound of and the यस. हम्म. the drama of like that यस multi-dimensional. यस यस. एनीवन एल्स? एनी कमेंट्स? कर सकते हैं, देव भाई कह रहे हैं. सो मल्टी डायमेंशनल एप्टीट्यूड्स एंड ओके. Now again Babaji is repeating, मानव शरीर का संचालन भी जीवन ही संपन्न करता है, यह तथ्य सुस्पष्ट है. The fact that it is जीवन indeed which drives the human body is absolutely clear. ठीक है. और मानव शरीर संचालन जो है, now here Babaji is talking about like humans are sanskar anushangi. Okay, they conform to sanskar in them, which pertains to jivan, not to the body. Okay, so this sanskar conformity is the uniqueness of humans. Okay? तो ये जितना भी संस्कार अनुषंगी होने के अर्थ में ही बहुमुखी परंपराएं देखने को मिला है, यह केवल मानव परंपरा में ही मिला है. Okay, it has been seen that prevalence of diverse and versatile traditions are there because the human body is driven by and for sanskar conformity. This is seen only in humans. Okay, so human body is driven by sanskar conformity and human body is driven for sanskar conformity also. There is always this intention in tradition to do improvement in sanskar. That itself is humanness. Otherwise, although we belonged, a deluded human belongs to the human order or the knowledge order, but his or her actions are inhumane. Okay, so they are not doing justice to the order to which they belong. Humans, human actions, our expectation and desire is that human actions must be humane. That will happen only by sanskar part. Okay, so this is what Babaji is saying here. संपूर्ण मानव में शुभाकांक्षा उमड़ती ही रहती है. Okay, this anyone has any suggestion? ये उमड़ने के लिए क्या शब्द कर सकते हैं? शुभाकांक्षा उमड़ती ही रहती है. वो the only thing I could think of is the aspiration for good keeps on gushing in all human beings. I'm not very happy with gushing. Yes, Shilpa Didi. One option could be surfacing. उमड़ती रहती है. Okay, it comes to surface. Okay. Surfacing. Anyone else? Any comments? क्या लें इसके लिए? उमड़ती रहती है. एंड एक इसमें फिर बाद में भी आता है, इस उमड़ती हुई शुभाकांक्षा के लिए
तो दूर विगत से अभी तक till the last these okay the fact that these gushes of aspirations for good are all the endeavors and expressions from ancient times till the last decade of the 20th century support the fact that these gushes of aspirations for good are in this direction only. Okay? This direction of improvement in sanskar, in the direction of awakening. So, इसको So, if Bhaiya, I any feel like I mean, since we have not decided one word, we could use both. Like, जैसे पहले we could use surfacing, here we could use gushing, so that the presence of both is there. Even How do you use the word in Hindi? Like, let's just say, in which context, in which sentences would you use this word? उमड़ती is normally used कैसे यूज करते हैं आप में से भी बताएं देव भाई भैया संपूर्ण मानव में शुभाकांक्षा की चाहना बनी ही रहती है हम्म Sir, can't we use overflowing or आवाज कट रही है आपकी hello, sir, can we जी use बोल flowing or overflowing feelings? हाँ इट इज समथिंग लाइक दैट लेकिन फ्लोइंग वर्ड मतलब यहाँ सेंटेंस में फिट नहीं होगा अच्छे से कीप्स ऑन फ्लोइंग ओके कीप्स ऑन फ्लोइंग इज ऑल्सो एन ऑप्शन कीप्स ऑन फ्लोइंग इन ऑल ह्यूमंस I mean, that way, umarti is gushing only, like the way you. gushing yes It yes is yes gushing only. yes That's why I was saying maybe we could use surfacing in one and gushing सरफेसिंग in the ठीक है other, or ठीक है stick to gushing. ठीक है So Spencer's question was how we normally use this umarti word in Hindi. If we were to use in some other context, how would we use it? Actually, it would be gushing only because it is something that is trying to come out in Yes, a great yes. flow. Yes, with a greater force, yes. Yeah. Okay. ठीक है मतलब I think we get So, the sense of it. Yes, yes, Spencer. No, I please. get the sense. Gushing like conveys that sense, and that's what I got when I just put it on the internet here. A few other words came up, such as swelling, like if something is swelling, or Yes, surging. yes. So, Surging is also a good word. Yeah, surging is good. Surging is good. As soon as you mention it, I like it. yeah. And So whatever feels good, but the gushing makes sense. Surging Yes. makes sense. They seem to be Hmm. synonymous. Good. Flowing So- makes sense. So. Yes. Okay. So it has been seen that these gushes of aspirations of good are in this direction only. It has been seen that universal availability of universal good and its eminence becomes possible only when all young and old produce evidence of awakening. Okay, इसको देख लेते हैं हिंदी में भी कहा गया है कैसे कहा है सर्वशुभ और उसकी प्रतिष्ठा सर्वसुलभ रूप में तभी संभव होना देखा गया है जब हर बच्चे बड़े जागृति को प्रमाणित कर दे ऐसी लोकव्यापीकृत जागृति लोकव्यापीकृत सर्वशुभ प्रमाण योग्य जागृति जागृत परंपरा में से के लिए होना भी सुस्पष्ट है इट इज ऑल्सो एब्सोल्युटली क्लियर बाय नाउ दैट such accessible awakening or the awakening capable of evidence of universal good is in by and for the awakened tradition. Okay. अभी यहाँ पर जो कह रहे हैं दिस इज इंपॉर्टेंट हियर जागृत जीवन में मध्यस्थ क्रिया मध्यस्थ शक्ति मध्यस्थ बल के स्वरूप को समझने की विधि सहित उसका कार्य स्वरूप और प्रयोजनों को ज्ञात कर लेना आवश्यक है. Okay, this I thought that
We'll just look at it again. जागृत जीवन में मध्यस्थ क्रिया, मध्यस्थ शक्ति, मध्यस्थ बल के स्वरूप को समझने की विधि सहित उसका कार्य, कार्य स्वरूप और प्रयोजनों को ज्ञात कर लेना आवश्यक है। यही शिक्षा संस्कार का प्रयोजन है। ऑल एजुकेशन, दिस इज द पर्पस ऑफ ऑल एजुकेशन। ओके, इससे लोकव्यापीकरण में, इस करण कार्यक्रम में सहज गति सुलभ होगा ही। तो इसको देखते हैं। It is essential to figure out the method of understanding the true form of mediative activity, mediative power, and mediative strength in the awakened Jivan, along with its working, design, and purposes. है ना, इसके कार्य, ये काम कैसे करता है ना, how does it work? So it's working needs to be understood. इसका कार्य स्वरूप, so कार्य स्वरूप is, मतलब I thought that whenever we are trying to understand something, we understand its working, we understand its design, and we understand its purpose. So इस तरीके से it's working, the working of awakened जीवन, the design of awakened जीवन, and the purpose of awakened जीवन, है ना, को ज्ञात कर लेना आवश्यक है। यही शिक्षा संस्कार का प्रयोजन है। This is indeed the purpose of education sanskar. This will naturally accelerate the program of dissemination. So we want this knowledge, this thing to reach, this proposal to reach maximum people, more people. So all this education sanskar, this will accelerate this program of dissemination. बताइए, any observations, any comments? Sounds good for me. ठीक है, so I think no comments. I'll take it as a वे जागृत मानव में संज्ञानशीलता एवं संवेदनशीलता में संतुलन हो जाना, जो मध्यस्थ क्रिया के बारे में बोल रहे हैं। वो भी आगे आएगा शायद, अभी तक तो आया नहीं है। संतुलन हो जाना आया है क्या? जो स्क्रीन पे लिखा है उस पे बात कर रहे हैं या कुछ अलग से कह रहे हैं दीदी? ये जो ऊपर आई थी ना लाइन में, मध्यस्थ क्रिया ऋण में, तो हाँ जी, ये जागृत जीवन में मध्यस्थ क्रिया, मध्यस्थ शक्ति, मध्यस्थ बल, ये दिख रहा है मेरे को। है ना, अभी संतुलन शब्द तक हम, मेरे को लगा नहीं है कि पहुंचे हैं। आगे भी आएगा, मेरे को लग रहा है शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है, तो आगे पढ़ लेते हैं दीदी, फिर बात कर लेंगे। अनलेस यू कैन शो मी कि किधर हो रहा है ये। वो अभी तो नहीं पढ़ा अभी हमने। अभी हम, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। ठीक है, अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं एंड देन वी कैन डिस्कस इट। बताइए कौन पढ़ेंगे इसको? हाँ, मैं पढ़ लेती हूँ भैया। जी वंदना दीदी। मध्यस्थ क्रिया को परमाणु के मध्यांश के रूप में पहचाना गया है। चैतन्य परमाणु में भी मध्यांश का होना स्वाभाविक है, क्योंकि चैतन्य इकाई मूलतः गठनपूर्ण परमाणु ही है। इस परमाणु में विशेषता गठनपूर्णता है। गठनपूर्णता की मौलिकता है अणुबंधन और भारबंधन मुक्त और आशा विचार इच्छा बंधन का प्रकाश, और इस क्रम में आशा विचार इच्छा बंधन मुक्ति ही जागृति का स्वरूप है। फलस्वरूप जागृत जीवन का निश्चित कार्यकलाप
मानवीय और मानवीयता पूर्ण परंपरा। ऐसे चैतन्य इकाई में मध्यस्थ क्रिया का स्वरूप और कार्य भी यथाशक्ति को बनाए रखने और जीवन क्रम, जागृति क्रम और जागृति को अक्षुण्ण बनाए रखते हुए नित्य वैभव को नियंत्रित किए रहना ही परंपरा के रूप में मध्यस्थ क्रिया सहज मौलिकता है। जी दीदी, थैंक यू। Mediative activity has been recognized as the nucleus of the atom. As the sentient entity in itself is basically a completely constituted atom only, it is natural for the sentient atom also to have a nucleus. Constitution completeness is the distinctive feature of this atom. Freedom from molecular bonds and gravitational bonds, and exposition of bondage of hopes, thoughts, and desires is the uniqueness of constitution completeness. And on this course, the liberation from bondage of hopes, thoughts, and desires is the true form of awakening. Humans and human tradition, or humane tradition, are the definite activities of the awakened Jivan. True form and activity in such a sentient unit is maintaining the state of being and continuity of living world progression, awakening progression, and awakening, and keeping the eternal grandeur intact. This indeed is the essence of the mediative activity in the form of tradition. Good. Thank you, Vandana Didi. Thank you, Spencer. So again, here, Babaji is re-emphasizing a concept. मध्यस्थ क्रिया को परमाणु के मध्यांश के रूप में पहचाना गया है. Okay, so mediative activity has been recognized as the nucleus of the atom. Okay, it is the nucleus which which is responsible for this madhyasth kriya. So what is the madhyasth kriya? To maintain. Okay, so it is the nucleus which maintains the structure of the atom. Now, Chaitanya Parmanu, now the sentient entity also is an atom. Chaitanya जो है, जीवन जो है, this also is an atom. So चैतन्य परमाणु में भी मध्यांश का होना स्वाभाविक है. हर परमाणु में मध्यांश होता है, तो चैतन्य परमाणु में भी मध्यांश होगा ही. And all atoms have a nucleus, so the Jivan atom will also have a nucleus, because ये अपने में भी एक परमाणु ही है. तो ओनली डिफरेंस बीइंग ये गठन पूर्ण परमाणु है. ओके, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ the elements, it does not change. Okay, number of particles, it does not change, it remains stable. So as the sentient entity in itself is also basically a completely constituted atom, is basically a completely constituted atom only, it is natural for the sentient atom also to have a nucleus, है ना, उसमें भी मध्यांश का होना स्वाभाविक है. इस परमाणु में विशेषता क्या है? गठन पूर्णता इसकी विशेषता है. सो कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीटनेस इज द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ दिस एटम. इसकी मौलिकता क्या है? ये अणुबंधन भार बंधन से मुक्त हो जाता है और आशा विचार इच्छा बंधन का प्रकाशन होता है. और फिर जागृति क्या है? आशा विचार इच्छा बंधन से मुक्ति ही जागृति का स्वरूप है. सो दिस इज कैप्चर्ड हियर लाइक फ्रीडम फ्रॉम molecular bonds and gravitational bonds, and exposition of bondage of hopes, thoughts, and desires is the uniqueness of constitution completeness. And on this course, the liberation from bondage of hopes, thoughts, and desires is the true form of awakening. जी शिल्पा दीदी. Bhaiya, I was suggesting that freedom from molecular bondage and gravitational bondage instead of using bonds.
I don't know. Normally, what we are using when we talk about gravitational or molecular bonds use कर रहे हैं या bondage use कर रहे हैं? At other places, let me see. मतलब while reading, like I felt bondage is better, that's all. Molecular bondage. Let us see. Let us see. Yeah. Okay, gravitational bondage, gravitational bondage, gravitational bondage, gravitational bondage, bondage. Yes, yes. Looks good. ठीक है. Good, दीदी. Bondage. ठीक है. And exposition to bondage of hopes, thoughts, and desires is the uniqueness of constitution completeness. And on this course, the liberation from bondage of hopes, thoughts, and desires is the true form of awakening. Okay, so I think the author is describing the complete flow. Okay, there are insentient atoms, then we have the sentient atoms, and then we have awakening. ऐसी चैतन्य इकाई में मध्यस्थ क्रिया का स्वरूप और कार्य भी यथास्थिति को बनाए रखने और जीवनी क्रम, जागृति क्रम और जागृति को अक्षुण्ण बनाए रखते हुए नित्य वैभव को नियंत्रित किए रहना ही परंपरा के रूप में मध्यस्थ क्रिया सहज मौलिकता है. So, in Madhyasth Darshan, Babaji has sort of, proposed that Madhyasth Kriya indicates continuity of something. Okay. Now, in deluded tradition, also we want continuity of something. So, what is the continuity we want? We want continuity of financial stability. We want continuity of good physical health. Okay, so it is in the domain of physico-chemical world that all our mental energies are focused. Okay, जो 4.5 क्रिया है, 4.5 activities, it is focused on the physico-chemical world. As long as humans are living in deluded tradition, they also want continuity, but continuity within the realm of physico-chemical world. ठीक है. अभी इसको क्या कह रही है कि एक परंपरा के रूप में जागृति, द कंटिन्यूटी ऑफ अवेकनिंग इन द फॉर्म ऑफ ट्रेडिशन, that needs to be there. Only then humans will forever live on this earth. Otherwise, under delusion, our efforts to get to a state of continuity also cause problems for us. Okay, we have seen it in the form of global warming and resource depletion and polar ice melting and glaciers melting and all these things we are seeing. It is because humans have not understood this, how continuity will be there. What is that mediative activity? Okay, this is I think this is how I look at it when I read this paragraph. Very well put, Bhaiya. Okay, any observations here? Any comments? But yeah, I think when we say these things are not understood, I would rather put it in a way that I think these things are understood, but then the relationship of the humans, um, of these things, and then I don't know how to put it. So what I'm trying to say is, science has of course recognize what can cause what, and then what can be the repercussions of that, those results. But then somehow we are like blinded by that, Yes, and high Babaji has hand. given, yes, and Babaji has given a reason for that also, that to consider oneself only as body and not as a combination of body and Jivan is the root cause of all problems. Okay,
This is something Right. which I also see myself in our family also. Like till I did my first Parichaya Shivir, I did not have this clarity about myself that I'm a combined form of body and Jivan. And the body, in body, composition and decomposition, formation and decomposition is bound to happen. This is the law of nature. Okay, it is the immortality of Jivan by understanding which we can maintain the mediative activity, the mediative state. Okay, without understanding that, any attempt to reach mediative state is futile. Right. Okay, so all this elaborate explanation which Babaji is doing, which is sort of, at many times it looks like repeating, it is trying to emphasize that we wanted continuity, we are striving for continuity, all our efforts are actually causing more disruption, and we do not know why, because we humans have not understood ourselves. What is our true form? Our true form is body and Jivan. Okay, it is in this form. So this is what was written in the previous paragraph also. All this knowledge will naturally accelerate the program of dissemination. This is what needs to be disseminated. Not like it has to be forced, but this proposal has to be available to everyone. And then one can evaluate it. Without this, like we are actually giving rise to more problems while trying to solve some problems. We solve one problem, we create two more problems. Yes. Yes. ठीक लग रहा है? जी भैया. ठीक है, आगे भी बढ़ सकते हैं. कौन पढ़ेंगे? जी देव भाई, आप पढ़ेंगे? जी जी. अस्तित्व में विकास क्रम विधि से संपूर्ण भौतिक और रासायनिक वस्तुओं और द्रव्यों का रचना लक्ष्य उसके पुष्टि में विरचना कार्य परंपरा के रूप में होना स्पष्ट किया जा चुका है. संपूर्ण रचना में अणुरचित और कोशारचित रचनाओं में अपने अपने त्व सहित व्यवस्था के रूप में वंशानुषंगीय मध्यस्थ क्रिया को प्रमाणित करता हुआ देखने को मिला है. इसी क्रम में परिणामानुषंगीय, बीजानुषंगीय और वंशानुषंगीय रचना एवं कार्यों के रूप में स्पष्ट है. जीवनी क्रम में जीवन वंशानुषंगीय संतुलन और त्व सहित व्यवस्था अर्थात वंशानुषंगीयता के त्व सहित व्यवस्था को प्रमाणित करने के अर्थ को स्पष्ट हुआ है और अध्ययन गम्य है. यही संतुलन और व्यवस्था एवं समग्र व्यवस्था में भागीदारी का प्रमाण ही मध्यस्थ क्रिया का होना है. मूलतः जीवन सहज चैतन्य प्रकृति में से चैतन्य पद प्रतिष्ठा को संतुलित बनाए रखना तात्विक रूप में मध्यस्थ क्रिया है, क्योंकि मध्यस्थ क्रिया मध्यांश या नाभिकीय क्रिया को महिमा होना पहले से स्पष्ट है. जी, थैंक यू देव भाई. स्पेंसर? Yes. By way of development progression in existence, the goal of all physical and chemical objects and matter is composition and decomposition, is complementary to that. It has already been clarified that all this is in the form of tradition. In all compositions, molecules, molecular compositions, and cellular compositions are seen to be exhibiting and producing evidence of mediative activity in the form of orderliness along with their respective innateness. On this course, constitution conformance, seed conformance,
and species conformance is apparent by way of formations and activities. In living world progression, Jivan produces evidence of balance in species as well as innateness with orderliness of species. This fact becomes clear and it is studyable. This balance and orderliness and evidence of participation in the overall orderliness, this itself is the mediative activity. Basically, to maintain the balance and of eminence in and of the sentient plane in the sentient entity is its in a true sense the mediative activity, because the fact that mediative activity is the magnificence of nucleus or the central activity is already clear. I think this is the paragraph from which Indu Didi was saying something a few minutes ago. And this balance and संतुलन ये सब इसी में आ रहा है. No, she was actually saying Sagyanshilta and Samvedanshilta. संज्ञानशीलता, That is not yes, mentioned that is here. not here. Yes, yes, As yet. yes, yet, correct. तो अस्तित्व में विकास क्रम विधि से संपूर्ण विधि संपूर्ण भौतिक रासायनिक वस्तुओं का द्रव्यों का रचना लक्ष्य उसके पुष्टि में विरचना कार्य परंपरा. इसको पढ़ लेते हैं एक बार. अस्तित्व में विकास क्रम विधि से संपूर्ण भौतिक और रासायनिक वस्तुओं और द्रव्यों का लक्ष्य रचना है और उसके पुष्टि में विरचना कार्य परंपरा के रूप में होना स्पष्ट किया जा चुका है. So by way of development progression in existence, the goal of all physical and chemical objects and matter is composition, and decomposition is complementary to that. It has been already clarified that this is in the form of tradition. Okay, ये सब परंपरा के रूप में है, ये स्पष्ट किया जा चुका है. संपूर्ण रचना में अणु अणुरचित और कुशा रचित रचनाओं में अपने अपने त्व सहित व्यवस्था के रूप में वंशानुषंगीय मध्यस्थ क्रिया को प्रकाशित प्रमाणित करता हुआ देखने को मिला है. सो हियर बाबा जी इज बिल्डिंग के मध्यस्थ क्रिया को थोड़ा और एक्सप्लेन कर रहे हैं. वी विल रीड द इंग्लिश पार्ट ओनली. आप साथ साथ हिंदी वाला देखते रहें बेशक. इन ऑल कंपोजिशंस molecules, molecular compositions and cellular compositions are seen to be exhibiting and producing evidence of mediative activity in the form of orderliness along with their respective innateness. Okay, so all these compositions, they exhibit and produce evidence of mediative activity because they are in the form of orderliness. Okay, वो व्यवस्था के रूप में है. हर इकाई व्यवस्थित है और व्यवस्था समग्र व्यवस्था में भागीदारी कर रही है. Okay, so they are in the form of orderliness along with their respective innateness. On this course, constitution conformance, seed conformance, and species conformance is apparent by way of formations and activities. इसी क्रम में परिणामानुषंगीय, बीजानुषंगीय और वंशानुषंगीय रचना एवं कार्य के रूप में स्पष्ट है. तो उसमें रचनाएं भी हैं और ये वाले सारे एक्टिविटीज भी हैं. Apparent by way of formations and activities. In living world progression, Jivan produces evidence of balance in species as well as of innateness with orderliness of species. These facts become clear and is studyable. ओके, कि ये अर्थ स्पष्ट हुआ है और अध्ययन गम्य है. अध्ययन गम्य है मतलब स्पष्ट हुआ है. बाबा जी सेइंग मुझे स्पष्ट हुआ है, द ऑथर, इट बिकेम क्लियर टू द ऑथर. एंड अध्ययन गम्य है मतलब इट कैन बिकम क्लियर टू एवरीवन. इट इज स्टडीएबल. आई हैव स्टडीड इट एंड इट इज studyable by everyone. It can be studied by everyone. Everyone who studies will reach this conclusion only. Okay, this is the crux of studyable. This balance and orderliness and evidence of participation in the overall orderliness, this itself is the mediative activity. है ना, संतुलन बना रहना,
remaining in the state of balance and its continuity. This is itself is the mediative activity. यही संतुलन और व्यवस्था एवं समग्र व्यवस्था में भागीदारी का प्रमाण ही मध्यस्थ क्रिया का होना है. Basically, to maintain the balance of eminence in and of the sentient plane in the sentient entity is in true sense the mediative activity. मूलतः जीवन सहज चैतन्य प्रकृति में से चैतन्य पद प्रतिष्ठा को संतुलित बनाए रखना तात्विक रूप में मध्यस्थ क्रिया है, क्योंकि मध्यस्थ क्रिया मध्यांश या नाभिकीय क्रिया की महिमा होना पहले से स्पष्ट है. Because the fact that mediative activity is the magnificence of nucleus or the central activity is already clear. Okay. Any comments? ये फर्स्ट लाइन कुछ खास गई नहीं भैया. बताइए बताइए. Yeah, I mean Oh. it's unclear actually. I'm not sure I understand this. एक बार हिंदी में देख लेते हैं. पहले हिंदी में मतलब क्या आ रहा है उसको देख लेंगे, देन विल सी द इंग्लिश पार्ट. अस्तित्व में विकास क्रम विधि से संपूर्ण भौतिक और रासायनिक वस्तुओं और द्रव्यों का रचना लक्ष्य और उसके पुष्टि में विरचना कार्य परंपरा के रूप में होना स्पष्ट किया जा चुका है. क्या मतलब निकलता है इसका? The physical objects matter. So here, I mean English से थोड़ा क्लियर होने के चांसेस जो इंग्लिश पढ़कर ही हो रहे हैं. ओके. मेरे लिए तो when you say so I think so this is clear. The goal of all physical and chemical objects and matter is composition. Is that correct? I mean, here we take a pause. Yes, yes, and decomposition is complementary to that. है ना, हिंदी में आता भी है at different places. रचना विरचना परस्पर पूरक है. ओके. तो यहाँ पर हमने जो हिंदी में पुष्टि में विरचना कार्य है, ये क्या हुआ जो इंग्लिश में मुझे मिल नहीं रहा है? See, this is something which all of us have found, that when we look at Hindi sentences, sometimes we all find that some comma, some full stop, some word here or there, and that is there. So when we encounter such a situation, what I do is I try to first decode the whole sentence. Okay, so what is in light of everything else that we have understood in Madhyas Darshan, what is that this sentence is trying to convey? So when we pushti normally is like nurturing, right? Yes, yes. भैया बने रहना. पुष्टि means बने रहना. Yes, yes. तो फिर थोड़ा सा अजीब नहीं हो गया भैया, क्योंकि पुष्टि में विरचना कार्य और उधर हम decomposition is complementary. How is like पुष्टि में विरचना? तो आप कुछ सजेस्ट करें कि क्या इसका बनेगा, मतलब क्या बनेगा हिंदी में, क्या बनेगा, फिर उसका इंग्लिश कर लेंगे. तो मैं ये कह रहा हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है, मतलब कह क्या रहे हैं कि सारे के सारे ये जितने भी हमारे पास में भौतिक रासायनिक वस्तु और मटेरियल हैं, उन सब से हमारे पास में कंपोजिशंस आती हैं, है ना. कंपोजिशन मतलब रचना, उनसे रचना होती है. और विरचना कार्य उसका पूरक है ना. उसकी पुष्टि है, मतलब रचनाएं, जो हमारा नॉर्मल नैरेटिव रहता है, हाउ विल फ्यूचर कंपोजिशंस टेक प्लेस व्हेन the existing compositions will get decomposed and raw material is again available. This raw material will be used for future compositions. If
all the compositions which are once formed did not degrade or decompose, how will future compositions Right, happen? right. It's like a, ठीक है. It's like a What is it? cycle. Cycle. It's like a Cycle. cycle. भैया जैसे चारों अवस्थाएं हैं उसमें ये अच्छे से हम देख सकते हैं इन चीजों को ना। जी जैसे फर्स्ट है पदार्थ अवस्था, जी सेकंड हो गई जी हमारा प्राणावस्था। तो जो प्राणावस्था बनी है वो पदार्थ अवस्था से ही पूरकता और उपयोगिता के रूल को फॉलो करती है, बनी है। राइट जब वो विरचना में जाती, मतलब विरचना मतलब नष्ट होना, जाती है तो यस वापस उसमें चेंज हो जाती है पदार्थ अवस्था करेक्ट में। करेक्ट तो ये चक्र बिल्कुल चलता है हमारा चारों यस अवस्था में, तो यस इसको ये कह रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल जी शिल्पा दीदी Yeah, so Bhaiya, I was suggesting that the nourishment of the formation goal is decomposition. मतलब मुझे इस सेंटेंस लाइक हिंदी से मुझे ये मीनिंग आ रहा है बिकॉज इसमें और नहीं है, इसमें रचना लक्ष्य उसके पुष्टि में विरचना कार्य, मतलब इन ओके द्रव्यों सो का प्लीज रचना। सो कैसे सजेस्ट कीजिए इसमें आई हैव कॉपीड इट या by way of development progression in existence the goal of all physical and chemical no, so I objects was and no, I was suggesting by way of development progression in existence, the nourishment of the formation goal of all physical and chemical objects. I missed the Sorry, nourishment the nourishment of the formation goal for all physical and chemical objects and matter is decomposition, is how I'm reading it. I don't know if I'm right or wrong. And then this has already been clarified in the form of tradition. okay let me Yeah. reread it आप सब भी पढ़ लीजिए by way of development progression in existence the nourishment of the formation goal of all physical and chemical objects and matter is composition is decomposition थोड़ा सा अभी ठीक नहीं हुआ दीदी But I think I get the gist when Shilpa Didi explained. हाँ बताइए बताइए करेक्ट कराइए The nourishment of the formation goal of all is decomposition. मतलब भैया आई एम सेइंग कि इसमें यहाँ पे कॉम्पोजिशन हटा दें एंड केमिकल ऑब्जेक्ट्स एंड मैटर नो एंड मैटर इज decomposition. This has already been clarified in the form of tradition. How about leading to composition? The nourishment of the formation goal of all physical chemical objects leading to composition of all physical and chemical objects is decomposition. दोबारा से बोलिए मतलब भैया इसमें कॉम्पोजिशन नहीं आएगा क्योंकि फॉर्मेशन हमने पहले यूज कर लिया ना। अच्छा ओके द फॉर्मेशन गोल ऑफ ऑल फिजिकल एंड केमिकल ऑब्जेक्ट्स एंड मैटर इज डीकम्पोजिशन। ये कॉमा हट जाएगा यहाँ से मैटर के बाद। So Didi, how about we just replace formation with composition? हाँ, that is fine. The Because nourishment of the the no, but it's nourishment. formation ना, मतलब रचना है ना, so So because we have been using composition and decomposition, like rachana virachana, that's why we have been using these are like standard terms. हाँ, we can do that actually. Yeah, so I think yes, this is what I understood. And this is also how I understood this because रचना लक्ष्य उसके पुष्टि में विरचना कार्य। मतलब कुछ विरचना से फिर वो
उसकी वजह ठीक से है, फिर वो ठीक है, आई नया एम गुड नया विद दिस। कंपोजिशन। ऐसा लग रहा है, एक बार पढ़ लेते हैं। बाय वे ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्रेशन इन एग्जिस्टेंस द नरिशमेंट ऑफ द कंपोजिशन गोल ऑफ ऑल physical and chemical objects and matter is decomposition. It has been already clarified that all this is in the form of tradition. ठीक है, I think there's a limit which words can communicate, and the sense we already have. I think all of us are, like generally in tune with what is it is trying to communicate. I'm good with the first formation also. जी भैया। Hmm. तो उसमें सेकंड वाले में पूरक आ गया था, डिकम्पोजिशन इज कॉम्प्लीमेंट्री विच वाज नॉट रिटन इन हिंदी, सो दिस इज मैचिंग बेटर। लेट्स गो विद दिस। गुड, ठीक थैंक है यू भैया। दीदी। क्विकली सेकंड लाइन में भैया जो वंशानुसंगीय वर्ड है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन नहीं हुआ है। ये जो है ना वंशानुसंगीय मध्यस्थ क्रिया, प्रोड्यूसिंग एविडेंस ऑफ मीडिएटिव एक्टिविटी, वहां पर है वंशानुसंगीय मध्यस्थ क्रिया, यहाँ पे है और मध्यस्थ एक क्रिया। सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये वाला ये मध्य। ओके, ओके, वन मोमेंट, वन मोमेंट। हाँ, एविडेंस ऑफ मीडिएटिव एक्टिविटी, ओके। तो इसको स्पीशीज कॉन्फॉर्मेंट मीडिएटिव एक्टिविटी कहेंगे। व्हाट इज द सजेशन? ये कहना चाह रहे थे? ये वही डिस्कनेक्ट हो गए क्या? कन्फॉर्मेंस होगा भैया, या कन्फॉर्मेंट? कन्फॉर्मेंस, स्पीशीज कन्फॉर्मेंस मीडिएटिव एक्टिविटी। नहीं, ये एक तरह से एडजेक्टिव के रूप में है, तो कॉन्फॉर्मेंट साउंड्स बेटर। सॉरी, बैटरी डाइड। आप डिस्कनेक्ट हो गए थे देव भाई? वो जी भैया, बैटरी डाइड सो। अच्छा, ओके, ओके। सो इसमें ये स्पीशीज कन्फॉर्मेंट ऐड कर दिया है अभी। दिस इज हाँ व्हाट यू वर हाँ जी, सेइंग। हाँ जी, यस। गुड, गुड, गुड। एंड सडनली आई एम सीइंग करमवीर जी भी ज्वाइन किए हैं। करमवीर जी, गुड मॉर्निंग। भाई साहब नमस्ते, सभी साथियों नमस्ते, को नमस्ते जी। नमस्ते, नमस्ते भैया, नाइस टू हैव यू इन द मीटिंग। थैंक यू। मैंने अभी लिंक देखा तो वैसे ही ज्वाइन कर लिया जी। ठीक है, नहीं नहीं, और मैंने अभी देखा कि कोई कमेंट आया है चैट बॉक्स में, तो मैंने देखा तो आपने लिखा है, तो देन आई लुक्ड एट द लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट्स, तो जी मुझे जी देखा कि आप भी ज्वाइन किए हैं। वेरी जी। नाइस भैया, थैंक यू, बढ़िया। थैंक यू। ओके ओके। ठीक है, आई थिंक 5 मिनट हैं। इफ वी वांट वी कैन कवर वन मोर पैराग्राफ। जी जी, वी वांट। वी वांट जी। पढ़ेंगे कौन? हिंदी में पढ़िए आप में से कोई। हाँ, मैं पढ़ लेती हूँ। जी दीदी। चैतन्य इकाई में मध्यस्थ क्रिया गठन पूर्णता और उसकी निरंतरता को बनाए रखने में कार्यरत रहता है। इस संतुलन में आशा बंधनरत संपूर्ण जीवन, जो जीवनी क्रम में अपने को प्रमाणित करने में प्रवृत्त रहते हैं, उनमें नियंत्रण सहित ही शरीर को जीवंत रखने, आशा आशा अनुरूप जीने की प्रतिष्ठा बनती है। यहाँ शरीर को जीवंत बनाए रखने में मध्यस्थ क्रिया व्यक्त होता है। जीव संसार में
यही मौलिकता है कि वंशानुषंगीयता से भिन्न और कोई कार्य एवं आचरण उस शरीर को संचालित करते तक जीवन नहीं करता है, अर्थात वंशानुरूप कार्य करता है, जबकि मानव संस्कार अनुषंगी इकाई होने के कारण वंश विधि शरीर रचना तक ही सार्थक होना स्पष्टतया देखा गया है। अतएव मानव के संबंध में संपूर्ण अध्ययन जीवन सहज और संस्कार सहज क्रम में ही होता है, तभी मानवत्व सहित व्यवस्था समग्र व्यवस्था में भागीदारी होता है। This is what you were explaining earlier. Yes, over to Spencer. In this sentient entity, mediative activity is engaged in maintaining the constitution completeness and its continuity. In this balance, capability develops in all the jivans, engrossed in the bondage of hope and wanting to produce evidence in living world progression for keeping the body alive with regulation and to live according to hope. Here, mediative activity expresses itself in and by keeping the body alive. Uniqueness of the animal world is that Jivan does not indulge in any activity or conduct different than that of the species to which the body belongs. In other words, indulges in activities only according to the species. On the other hand, it has been clearly seen that in humans, due to their being sanskar conformant entities, the role of species is only within the ambits of composition of human bodies. Thus, all the study related to humans is with reference to only Jivan and Sanskar. Only this leads to orderliness with humanness and participation in the overall system. Okay, so this is needs to be read again and again. चैतन्य इकाई में मध्यस्थ क्रिया गठन पूर्णता उसकी निरंतरता को बनाए रखने में कार्यरत रहता है. इन द सेंटिएंट एक्टिविटी मीडिएटिव एक्टिविटी इज एंगेज्ड इन मेंटेनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीटनेस एंड इट्स कंटिन्यूटी. इस संतुलन में आशा बंधनरत संपूर्ण जीवन जो जीवनी क्रम में अपने को प्रमाणित करने में प्रवृत्त रहते हैं, उनमें नियंत्रण सहित शरीर को जीवंत रखने आशानुरूप जीने की प्रतिष्ठा बनती है. यहां शरीर को जीवंत बनाए रखने में मध्यस्थ क्रिया व्यक्त होता है. ओके, सो the final line here is, here the mediative activity expresses itself in and by keeping the body alive. This is what is happening in the animal world, okay, in the animal order. Okay, the mediative activity is focused on jivan and to keep is focused on body, and to keep the body alive is it considered its main activity. Okay, जीव संसार में यही मौलिकता है कि वंशानुषंगीयता से भिन्न और कोई कार्य एवं आचरण उस शरीर को संचालित करते तक जीवन नहीं करता है, अर्थात वंशानुरूप कार्य ही करता है. Uniqueness of the animal world is that Jivan does not indulge in any activity or conduct different than that of the species to which the body belongs. In other words, indulges in activities only according to the species. जबकि मानव संस्कार अनुषंगीय इकाई होने के कारण वंश विधि शरीर रचना तक ही सार्थक होना स्पष्टतया देखा गया है. On the other hand, it has been clearly seen that in humans, due to their being sanskar conformant entities, the role of species is only within the ambits of composition of human bodies. Okay, जो वंश का काम है, जो species, the role of species is only pertaining to the body. Okay,
conduct is not defined by the body. Okay. I mean, if we see, we know so many people in the physical form, all of them are humans, but their conduct, there is so much of diversity and variation in that. From one extreme of inhumaneness to the extreme of humaneness, the whole spectrum is available. This is not found in animals. In animals, their conduct is as per the body they have. Okay, in humans, the conduct is not as per the body, the conduct is as per sanskar. Okay, this is in different ways Babaji has written it here. He has mentioned it again earlier also, but this is in a slightly different manner it has come out, and it's thought provoking. जी शिल्पा देवी, आपने हैंड रेस किया था. I'm getting a little confused, bhai. Actually, I was just thinking the role of species is only, matlab, the role of species conformance hona chahiye na? Because the role of species is only within the ambits. एक सेकेंड, लेट अस संस- देख लेते हैं. वंशानुरूप कार्य. ओके, जबकि मानव वंश अनुरूप है ना, वंशानुरूप इस वर्ड को. कार्य करता है. यस यस. I thought it would be species conformance. ओके. यस. मतलब कॉन्फॉर्मेंस को ना नॉर्मली वंशानुषंगीय के लिए कॉन्फॉर्मेंस कर रहे हैं. ये वंशानुरूप भी वैसे इसको इनकन्फर्मिटी विद स्पेसिस लिखा जा सकता है. नहीं, एक्चुअल में ना दीदी, जहां पर आप ये वंशानुरूप, ये वाला वंशानुरूप कह रहे हैं ना. हाँ, मतलब मैं तो एक्चुअली जैसे इंग्लिश में पढ़ रही हूँ ना, तो मुझे लग रहा है कि मतलब जस्ट टू से दैट, कहाँ गया एक मिनट में इंग्लिश की लाइन. द रोल ऑफ स्पीशीज इज ओनली विद इन, मतलब मेरे को थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ने में आई वाज फाइंडिंग इट स्ट्रेंज. आई डोंट नो इफ स्पेंसर नहीं फील्स दैट. नहीं, जैसे ना इसको एक बार देख लेते हैं. जबकि मानव संस्कार अनुषंगी इकाई होने के कारण वंश विधि शरीर रचना तक ही सार्थक होना स्पष्टतया देखा गया है ना. तो जो वंश विधि है, इसको स्पीशीज कह रहे हैं एक्चुअली भैया यहाँ वो पर. एक्चुअली शिल्पा दीदी ऊपर वाला सेंटेंस पढ़ रहे हैं लेकिन हिंदी में, और इंग्लिश में नीचे वाला, तो वहां पे शायद गड़बड़ हो रही है. वंशानुरूप जो है दीदी, वो पिछले सेंटेंस में है जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन ओनली अकॉर्डिंग टू द स्पीसीज किया है इंग्लिश में. ओके आई होप ओके. दैट. अब एक बार दोबारा देख लीजिए. अब लाइन बाय लाइन हो गया. कर्मिक जीवन अर्थात वंशानुरूप कार्य करता है, तो इंडल्जेस इन एक्टिविटीज ओनली अकॉर्डिंग टू स्पीशीज. जबकि मानव संस्कार अनुषंगी इकाई होने के कारण, ऑन द अदर हैंड, इट हैज बीन क्लियरली सीन दैट ह्यूमंस, ड्यू टू देयर बीइंग संस्कार कॉन्फॉर्मेंट एंटिटीज, संस्कार अनुषंगी होने के कारण वंश विधि शरीर रचना तक ही सार्थक होना स्पष्टतया देखा गया है ना. तो वंश का रोल जो है वो इट इज लिमिटेड टू द बॉडी, है ना. वंश विधि शरीर रचना तक ही. द रोल ऑफ स्पीशीज इज ओनली विद इन द एम्बिट्स ऑफ कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन बॉडीज. मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि फ्लो बन रहा है. मतलब आई डिड नॉट फाइंड एनी कंफ्यूजन, बट वी कैन लुक एट इट. आप बताइए, मे बी आई मिस्ड समथिंग. No, Spencer, when it's you okay, are bhaiya. also I'll reading just it. read it again later. I will read it again. Maybe I जी missed, like as bhaiya is saying, na. जी जी जी. Yeah, it's fine. We can continue. So we saying that it is the it we a capability develops in all the jivans that includes, so
being engrossed in bondage of hope is the capability that is developed in the jivans. Is that what you are saying? बताइए कहाँ पर? इन दिस बैलेंस, इस संतुलन में आशा बंधन रत संपूर्ण जीवन जो जीवनी क्रम को में अपने को प्रमाणित करने में प्रवृत्त रहते हैं, उनमें नियंत्रण सहित ही शरीर को जीवंत रखने, आशानुरूप जीने की प्रतिष्ठा बनती है। यहाँ शरीर को जीवंत बनाए रखने में मध्यस्थ क्रिया व्यक्त होता है। So in this balance, capability develops in all jivans. Which jivans? Now this is Okay. defined. ठीक है, Which are engrossed in bondage of hope and wanting to produce evidence of living provision for keeping the body alive. तो इसको हम लोग भी हाइफन हटा के ऐसे नहीं that are नहीं लिख सकते? Capability develops in all the jivans that are engrossed. Yes. Can do that. That are engrossed. जी. Yes. जी. ठीक है. I think we have reached the time limit where we should end our session today. Any closing remarks, any comments, any observations from any one of you? It was fun. It was good, Bhaiya. Thank you. Thank you, bhai sir. Thank you. It was Most really- welcome, Bhaiya. Most Thank you, welcome. Bhaiya. ठीक है. So we will meet again on next Sunday, same time, and continue from where we are closing today. Thanks for joining, and see you again next Sunday. Thank you. Namaskar. Namaste.